Okay, so right now, as you are listening to me and perhaps watching this on the screen, your attention is focused external to you. Lekin jab, even with eyes open, if you start going into that state where you are like daydreaming, and your focus is internal, that state is a hypnotic state. So क्लास के अंदर कभी कभी होता है कि लाइक कोई बच्चा बैठा हुआ है और उसकी आंखें खुली हुई और उन्हें देख रहा है. ओके, एंड टीचर जो उसको कहता है बेटा किधर हो, बिकॉज ही और शी इज इन हिज और हर ओन माइंड and you're like doing things, thinking about things. So physically the person may be there, but mentally is somewhere else. तो उसका जो attention है, उसका जो focus है, rather than external, it's internal. So जब हमारी तवज्जो internally focused होती है, तो हम जिस कैफियत में होते हैं वो कैफियत हिप्नोसिस की या ट्रांस की कैफियत होती है. Okay, and I'm sure you have experienced this. Who has experienced this, by the way? Raise your hand, raise your digital hand if you go on. Okay.